Hello and Assalamu alaikum. Today our topic is earthquake and tsunamis, and we will learn about earthquake, the causes of earthquake, and what are tsunamis and how they are formed. First of all, what is an earthquake? Earthquake is the sudden shaking of ground or earth surface. The shaking occurs most frequently on plate boundaries or fault lines. Another name for earthquake is tremblers. So earthquake is the sudden shaking, not a sudden movement, because earth is moving all the time in two ways. First, it is rotating, and second, it is revolving around the sun. But when it shakes suddenly in an unusual way, it is known as earthquake. So what is an earthquake? A sudden shaking of ground is called earthquake, and the second name for earthquake is tremblers. How earthquake originate, or what are the reasons of earthquake? Earthquake occur because of different reasons. First of all, the earthquake occurs mostly on plate boundaries, and there are different reasons for the earthquake. First of all is the movement of tectonic plates. When the earth move, the tectonic plate move in three ways. They come together, they move away from each other, and they slide past each other. These movements are called convergent, divergent, and transform, and these movements are basically the reasons for the earthquake. And earthquake is basically the release of pent up or release of energy, which is released in the form of seismic waves. So earthquake occur mostly on the fault line, and the basic reason is the movement of tectonic plates, and basically it is the release of pent up or energy, stored energy. It is the release of stored energy which cause the earthquake to shake. यानी जब ज़मीन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड को अर्थक्वेक कहा जाता है. ये नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक अनयूजुअल वे में अर्थ का शेक होना है. और मोस्टली अर्थक्वेक कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ आकर होते हैं? ऑन द प्लेट बाउंड्रीज. और इसकी रीज़न डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट है, जो जिसमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट आती हैं. और बेसिकली जो अर्थक्वेक है वो रिलीज है स्टोर्ड एनर्जी का. और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? द अर्थ इज डिवाइडेड इन थ्री लेयर्स: कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. तो कोर में जो टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उस बॉइलिंग या उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब वो सडनली रिलीज होती है, तो उसकी वजह से जो क्रस्ट में शेकिंग प्रोड्यूस होती है, उसको अर्थक्वेक कहा जाता है. Now there are different factors of earthquake. We will discuss each point. First of all, what is focus? Focus is the point at which earthquake originate, and it is found underground. So the point at which earthquake originate or earthquake occurs under the ground is known as focus. And epicenter is the place right above the focus. Where seismic waves strike first is known as epicenter. So what is the difference between focus and epicenter? Focus is the point where earthquake originate, while epicenter is the point where earthquake's waves strike first. Focus is found under the ground and epicenter is found on the ground. So focus क्या है? ज़मीन के अंदर जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको फोकस कहा जाता है, और ये ज़मीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड होता है. एपिसेंटर वो जगह है जहाँ अर्थक्वेक वेव या सिस्मिक वेव सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं, उसको एपिसेंटर कहा जाता है, और ये ज़मीन के ऊपर होता है, और इट इज़ राइट अबव द फोकस. व्हाट आर सेस्मिक वेव्स? Earthquake, the waves produced by earthquake are known as seismic waves, and it can result from an earthquake, and volcanic eruption or magma movement. In seismic waves,
because are produced because of three reasons: earthquake, volcanic eruption, or magma movement. They travel through the interior of the earth and can be measured because the speed of the seismic waves depend on density. We can use the travel time of seismic wave to map change in density with depth and show that the earth is composed of several layers. अब अर्थ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि सेस्मिक वेव्स होती क्या हैं। तो अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है और ये मूव करती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती बल्कि ये इन सर्कुलर मूवमेंट में दे ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस। अच्छा, अब सेस्मिक वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल ऐसे होती हैं कि सेस्मिक वेव्स की स्टडी से साइंटिस्ट ने या जियोग्राफर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, कोई एक लेयर नहीं है। क्यों? बिकॉज जो सेस्मिक वेव्स हैं उनकी उसका ट्रैवल का जो पैटर्न है या ट्रैवल की जो स्पीड है वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो कोर जो कि इनर मोस्ट पार्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मेंटल जो कि सेमी सॉलिड है और क्रस्ट जो सॉलिड है, इन तीनों में उसकी स्पीड डिफरेंट थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम। नाउ व्हाट इज फॉल्ट लाइन? Fault line is a long crack in the surface of the earth. Earthquake usually occurs along fault lines. Boundaries between tectonic plates are made up of a system of faults. Each type of boundary is associated with one of three basic type of faults. अब three types के faults होते हैं: normal fault, reverse fault and strike slip fault. अच्छा, fault line है क्या? Basically the place where tectonic boundaries of two tectonic plates meet or merge is known as a fault line. और बेसिकली फॉल्ट थ्री टाइप्स के होते हैं: नॉर्मल फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। और फॉल्ट लाइन बेसिकली वो बाउंड्री है जो दो फॉल्ट्स के दरमियान होती है। नाउ हाउ वी कैन मेजर एन अर्थक्वेक? In geography, the term magnitude refers to the strength of an earthquake. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड भी एक टर्म है जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सो मैग्नीट्यूड इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एनर्जी, और वी कैन से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हमने कहा अर्थक्वेक इज द sudden shaking of ground because of the release of pent up or stored energy within the earth. So the amount of energy that released during an earthquake is known as magnitude, or in simple words we can say that the strength of the earthquake is known as magnitude. And an instrument is used to measure the magnitude of the earthquake, which is known as seismometer or seismograph. Now what is seismograph? Seismograph or seismometer is an instrument used to detect and record seismic waves. Seismic waves are propagating vibration that carry energy from the source of an earthquake outwards in all directions. सेस्मोग्राफ क्या है या सेस्मोमीटर क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, अर्थक्वेक की टोटल स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड जो मेजर करता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं, या ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। हाउ सेस्मोग्राफ वर्क? Seismograph includes a base and a heavy weight hanging above it. आप देख सकते हैं कि इसकी एक हैवी बेस होती है जिसकी वजह से ये ज़मीन पे खड़ा रहता है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इसके साथ एक हैवी वेट हैंगिंग अबव इट, इसके ऊपर एक हैवी वेट हैंग होता है। द बेस हैज़ अ रोटेटिंग ड्रम, और बेस के ऊपर एक ऐसा ड्रम लगा होता है जो रोटेट कर रहा होता है, और उस ड्रम के ऊपर पेपर रैप होता है। एंड द वेट हैज़ अ पेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट, और जो वेट ऊपर हैंग किया गया है उसके साथ एक पेन लगा होता है। व्हेन द अर्थ शेक्स द बेस शेक टू, जब
अच्छा, अब ये ज़मीन के साथ ऐसे अटैच होता है कि ज़रा सी भी मूवमेंट, जो अनयूजुअल मूवमेंट जो है, उसको ये रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड कैसे करता है? क्योंकि जब बेस मूव करती है तो उसके साथ, बेस शेक करती है तो उसके साथ पेन भी शेक करता है, और वो उस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर जो पेपर रैप हुआ है उसके ऊपर निशान लगाता है। When the earth shake, the base shake too, but the hanging weight and pen do not. The pen make marks on the paper and record the shaking around 132 CE. ठीक है, और फिर उस शेकिंग को पेन रिकॉर्ड करता रहता है उस पेपर के ऊपर, जिससे इसे मेजर किया जाता है। सेस्मोग्राफ का काम करने का तरीका ये होता है। अच्छा, now we will learn about the history of seismograph. First of all, the Chinese seismograph was invented in 132 AD, and Chinese astronomer Zhang Heng created a seismograph, a device that detects the ground movement during an earthquake. You can see the picture of this seismograph. It couldn't predict quake, but it did show what direction they were coming from, even when they were hundreds of miles away. अच्छा, अब ये एक ऐसी मशीन थी जो ज़मीन पे किसी भी जगह पे होने वाले अर्थक्वेक को बता ज़रूर देती थी कि अर्थक्वेक हुआ है, बट वो उसके मैग्नीट्यूड नहीं बता सकती थी, ना ही ये बता सकती थी किस डायरेक्शन में हुआ है, और ना ही उसके की स्ट्रेंथ को बता सकता था। बट ये फर्स्ट सेस्मोग्राफ था जो ये ज़रूर बता सकता था कि अर्थक्वेक हो रहा है। द सेकेंड वन वाज मर्करी सेस्मोमीटर. Luigi Palmieri designed a mercury seismograph in 1855. Now, Palmieri's seismometer has U-shaped tube arranged along compass point and filled with mercury. When an earthquake hit, the mercury would move and make electrical contact that stopped a clock and started recording drum on which the motion of a float on the surface of mercury was recorded. अच्छा, अब इसमें ट्यूब्स थी जिसके अंदर मर्करी फिल था, और जब शेकिंग होती थी तो उससे ये मर्करी ऊपर जाता था और फिर वहाँ रुक जाता था, जिससे ना सिर्फ अर्थक्वेक मेजर किया जा सकता था, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एक्यूरेटली तो नहीं बट उसको मेजर ज़रूर किया जा सकता था। नाउ जो आज हम देख रहे हैं ये मॉडर्न सेस्मोग्राफ है. John Milne was the English seismologist and geologist who invented the first modern seismograph and promoted the building of seismological stations. In 1880, Sir James Alfred Ewings, Thomas Gray, and John Milne, all British scientists working in Japan, began to study earthquakes. They founded their seismological study of Japan, which founded the invention of seismograph. Milne invented the horizontal pendulum seismograph in सेम ईयर. सो मॉडर्न सेस्मोग्राफ जो था, जो आज भी हम देख रहे हैं, ये 1880 में डिस्कवर किया गया. नाउ इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, बट बेसिक टेक्नोलॉजी जो थी वो 1880 में. नाउ व्हाट इज रिचर स्केल? Richter scale, also called the Richter magnitude scale. Richter magnitude scale and the Gutenberg-Richter scale is a measure of the strength of earthquake developed by Charles Francis Richter and presented in his landmark 1935 paper, which is called the magnitude scale. Now, Richter scale क्या है? जो magnitude है, हमने कहा magnitude is the strength of an earthquake. अब उस स्ट्रेंथ को हम जब किसी स्केल पे मेजर करते हैं तो उसको रिचर ने एक स्केल दिया, रिचर स्केल जिसको कहा जाता है, जो मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ को बता देता है कि ये कितना डेंजरस था, इस अर्थक्वेक की ताकत कितनी थी. नाउ यू कैन सी द रिचर स्केल. You can see that 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 2, 3, 4 are minor, 4 and between 4 and 5 light, 5 and 6 moderate, 6 and 7 strong, and 7 and 8 major, and after 8 great. And you can see often felt the earthquake between minor and light earthquake often felt but only causes minor damages. Then moderate slight damage to buildings.
Then in strong earthquake may cause major damage in populated areas. Then major earthquake causing serious damage, and great earthquake that can totally destroy communities near its epicenter. So ये रिचर स्केल है जो उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कितना अर्थक्वेक कितना डेंजरस होता है. Now you can see some major areas where major earthquake occurs. The question bank is, what is an earthquake? So earthquake is the sudden shaking of ground, and we can say that a trembler is the another name for the earthquake. What is the other name of the earthquake? Trembler. What is focus? The point where earthquake originate is known as focus, and it is found underground. What is epicenter? Epicenter is point found just above the focus, and it is the place where seismic waves strike first. What are seismic waves? The waves that produced during an earthquake is known as seismic waves. What is magnitude? The amount of energy or the strength of the earthquake is known as magnitude. Which instrument is used to measure earthquake? Seismograph is used to measure an earthquake. Which scale is used to show the strength of an earthquake? Richter scale is used to measure the strength of an earthquake. It takes an earthquake to remind us that we walk on the crust of an unfinished planet. Now, what is tsunami? Tsunami is a Japanese word meaning harbor waves. A tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water, generally in an ocean or a large lake. So, tsunami क्या है? Large waves जो कि you can say that tsunami is the earthquake under the sea, or it is the series of large waves that produce during an earthquake that occur under the sea. Now, how tsunamis are formed, or what is the process of the formation of tsunami? A tsunami is a large ocean wave usually caused by an underwater earthquake or a volcanic explosion. जब पानी के अंदर कभी earthquake या volcanic explosion होता है तो उसकी वजह से जो waves produce होती हैं जो कि एक long area को long distance को travel करती हैं उसको tsunami कहा जाता है. अब अगर आप इस diagram को गौर से देखें तो यहाँ वेव लेंथ दिखाई गई है, वेव हाइट दिखाई गई है. सो सुनामी वेव जो है इसमें दो चीजें हैं, वेव लेंथ एंड वेव हाइट. अच्छा, अब डिफरेंट रीजंस की वजह से सुनामी आता है. अर्थक्वेक सुनामी, इरोजन सुनामी. इरोजन मीन जब किसी लार्ज स्केल पे इरोजन होती है या लैंडस्लाइड होती है जो पानी के अंदर जाती है तो उसकी वजह से भी लार्ज वेव प्रोड्यूस होती हैं. समटाइम वॉल्केनिक इरप्शन से, और समटाइम फॉलिंग मेटोर्स, मैग्मा सुनामी, मेगा सुनामी. नाउ सुनामी caused by some type of underwater action, यानी पानी के अंदर अर्थक्वेक की वजह से या इरोजन की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है. फर्स्ट. सेकंड थिंग, waves start at a height of less than 1 meter with wavelength of 100 to 150 kilometer and a speed of 800 kilometer per hour. मीन जब सुनामी स्टार्ट होता है तो इसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर होती है, वेव लेंथ 100 to 150 किलोमीटर होती है, जबकि इसकी हाइट बहुत कम 1 मीटर तक होती है. When waves reach shallow water, friction slows the waves and forces them to increase in height. अब जब shallow water में चला जाती है ये वेव मूव करती हुई सुनामी, तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है, बट फ्रिक्शन इसको फोर्स करती है कि ये अपवर्ड मूव करे. और फिर जब ये शोर पे पहुँचती है तो इसकी हाइट 30 से 50 किलोमीटर, स्पीड 30 से 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, बट इसकी हाइट 15 मीटर तक भी चली जाती है. सो जब ये स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होती है अंडर वाटर एक्शन की वजह से. सेकेंड, स्टार्ट में वेव की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है बट इसकी हाइट कम होती है, और हाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, जब ये सी शोर पे पहुंच जाती है तब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि इसकी स्पीड कम हो चुकी होती है. गुड लक.
and have a nice day.